ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतभृष्णते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशिकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, so hope all of you are doing good. Welcome, God of Mukul is sick, but still he has come. So I'm very grateful. So I think screen is visible to all of you. And here we are. जी सर। Yeah. So it will be a very small session. In device also we have covered some points from there. So this mind is not all in all. This is our session today. This is sixth number session. Two more sessions are there. Then there is a question answer session where question I will only bring and you can also ask. And then there is a very special session. That's how it ends. So uh, actually I was talking today only in the class that our zoology teachers, they are teaching only 33% of the body, right? They are teaching only gross body, the physical body, the liver and eyes and nose and the digestive system and this and that. They are part of such gross body actually, which is like the hardware of the mobile. It's already dead. उसके बारे में पढ़ाते हैं बस, माइंड के बारे में कोई नहीं पढ़ाता. मेंटल डिजीज डायरेक्टली दे वांट टू ट्रीट, but if you teach about the nature of the mind, then obviously a person may know and then take measures when needed, right? So we'll discuss this today. It's very important actually. Now, the mental disease, nowadays is increasing a lot. And we have been discussing it one time. I told you also that if physical disease is there, suppose you have got fever, like Mukul has got fever today. And if you tell Mukul that you have got fever, and he will not feel bad, हाँ भैया ठीक है मेरे को हो गया, दवाई ले रहा हूँ ठीक हो जाऊंगा. So it's not an insult to Mukul that you say अरे आपको फीवर है. But if you tell to Mukul that you have some mental disease, and then if the person has no mental disease, then okay. But if he has mental disease and you tell that you have mental disease, it's too much, right? In both the cases, it's insulting the person, and the person will not accept only first. So treatment becomes more painful when the disease is not accepted itself. ना मैं ठीक हूँ, है कि नहीं. जैसे मेरे एक साथी है, वो डॉक्टर हैं, यहाँ आपके गया में है, वो अभी पोस्टेड. So he was telling one incident that he came across a patient and he was himself a MD, MD, na doctors, na doctor of medicine. And then he was uh, coming to him and saying that like they brought this person, and then the problem was uh, the family members are saying that ये क्या करते हैं, इतना पैसा लेते हैं गठरी, उसके बाद जाके अपने पड़ोसी को देते हैं, तुम मेरा दाह संस्कार कर दो, मैं मर गया हूँ, ठीक है ना, आई एम डेड, यू डू दिस श्राद्ध सेरेमनी फॉर मी, माई सन्स विल नॉट डू, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. आप समझ रहे हैं किस लेवल का डिजीज है वो. एंड देन द पर्सन आर ट्राइंग टू कन्वे, नहीं नहीं आपका अभी शरीर है यार, यू आर अलाइव, यू डोंट हैव, आफ्टर डेथ इट हैपन, नो 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 मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को अभी कर दो, ये लोग मेरा करेगा कि नहीं करेगा, मैं मर गया हूँ. मतलब एंड देन इफ यू टेल द पर्सन दैट यू नीड ट्रीटमेंट, देन है मैं ट्रीटमेंट, मैं एमडी हूँ. अब आपको लग रहा होगा कि ये कहीं तो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं. मेंटल डिजीज आर लाइक दिस, इट्स लाइक इट्स टू मच, राइट? So and many time what happens is whatever
इनर वॉइस इज कमिंग, लाइक हमें अंदर से कोई भी इच्छा आती है, हमें क्या लगता है, हम ये चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, मैं ही हूं ये एक्चुअली ना, बट दैट मे बी माइंड, right? And mind is our enemy or not, we'll discuss this today. So it's a very, it's a dual thing actually, na? We'll see it ahead interestingly. Let's go ahead. So yeah, so little bit we will summarize the last session which we had, session number 5. uh, Actions are controlled by software. Mind is mind, intelligence and ego. So mind is like a storage of the desires, and the intelligence is like the processor, and ego is the functional identity. जैसे कि हमने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया था कि mind stores all the information, intelligence to process it, and whether it has to be acted or not. And identity, ego is the identity that I am male, I am female, I am this, I am that actually, no? Accordingly we process. The karmic cycle, we have discussed that actions lead to samskaras, and samskaras in mind lead to vasanas in the intellect. So that's how it goes. Vasanas has connection with intelligence. If vasanas are there, means you are fully addicted to something actually. And samskaras means those previous impressions are there. So we do some action, then sanskara develop, no, impression get imprinted on our mind, and then if we repeatedly do, then it become vasana. It's called addiction. So then our intelligence is also affected. Sometimes we use our intelligence to justify our vasanas. That much it becomes actually. And if you ask nowadays any addicted person, or the person who is having some extramarital affair or something like that, they will tell you that everyone is doing, right? Now if you ask some bachelors that अरे आप अपना character क्यों lose कर रहे हैं, you are indulging with other ladies and many ladies, you can tell the lady that why you are roaming around with so many boys. They will tell you simply that, do you guarantee that what partner you are going to get, uh, they will be chaste and loyal, and they will be having a good character and purity? Then why I should keep myself pure for that time? Are you understanding what logic they are giving? Because I am not sure of getting a proper person, why I should be no, I will pure and that person will be polluted. So better be same. So somehow or other they will use their intelligence or logic to justify the vasanas. So this becomes the problem when it comes to vasana level actually, no? So breaking the karmic cycle, na? So we need education to stop wrong vasana. So we have to purify our intelligence. We have to give a strength to our intelligence, and that comes by reading shastra, the scriptures. And for the past impression which is there stored in the mind, for them we need to give them good experience to delete wrong samskaras. Okay. So we need to give positive experience. Like I was discussing, that somebody is very addicted to watching Bollywood news and Bollywood. So if you just, as soon as he type B, as soon as he types B, Bollywood will show in his search actually, because he has searched many times. This is called impressions. So he has to voluntarily type after B also. Don't just B and enter. B and enter means Bollywood will open. See, I'm not against Bollywood and then we should do or not. I'm just giving example. But suppose he wants to change it, that I want some uh, eternal truth to be read. So he has to, if he wants to go for Bhagavad Gita, and he has been going for Bollywood news many times. So as soon as he types B, it will show, the search engine will show Bollywood for him. But he has to type voluntarily Bhagavad Gita and then type, and things will change. So once he enter and then see, array, it is so divine and practical knowledge given, and he just one reading and then I am getting so much. So then again he visits there, those things, those interest for the lower things will go away. So we are giving example of that. Suppose somebody is addicted and very fond of dancing, then he should dance in kirtan, then that is purified. Somebody is singing, then sing for Lord. Somebody likes eating or cooking, then they can eat the prasadam, then they will leave the taste for non-veg or the very lower things actually. So that is called replacement. No wants to go in to roam around the place, then better to go roam around to the place like
Mayapur, Jagannath Puri. So it's a places where you get all the experience. You get to you go to sea bath, you get to enjoy the beaches, and also there is a temple. So like that, we have to voluntarily make these choices, and then we can uh, purify them, and we can delete the wrong sanskaras by giving them alternative higher experience. Then we discuss that brain is not mind. Mind programs the brain. Neuroplasticity, there is a concept here. I'll show you the video later. And then we discuss that habits are formed by programming of the mind and intelligence. Mind and intelligence need reprogramming. तो अभी तक हमारा जो प्रोग्रामिंग है उसके बेसिस पे हम चल रहे हैं. We want to make it more better and purified, then we need reprogramming. So today discussion will be on this only. So what programs the mind? So sometimes there is a misconception that brain only is mind actually, na. Okay. So what is Shivam and Ipsi? So brain is a moist computer made of gray matter that sits in our skull. So it is not a mind actually. The mind is the abstract operating system that runs on the top of moist computer. So basically, this is the physical gross structure is brain, and that is not mind. Mind is different. Mind is subtle actually. Now we can't see that. ना mind is सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको हिंदी में. तो सटल ना वो दिखता नहीं है आपको, जैसे वेव्स उस टाइप का. सो इफ माइंड प्रोग्राम्स द ब्रेन, देन व्हाट प्रोग्राम्स द माइंड, है कि नहीं. सो ब्रेन जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, एंड माइंड जो है वो द ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस स्ट्रक्चर को यूज करता है, उसको फ्रेम करता है. तो भाई अब कह रहे हैं कि माइंड जो है वो ब्रेन को प्रोग्राम करता है. तो क्या माइंड को कौन प्रोग्राम करता है? कैन वी रीप्रोग्राम द इट इन द वे वी वांट, है कि नहीं. कैसे हम चाहते हैं उसे कर सकते हैं क्या? तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये माइंड है क्या, और ये गलत है या सही है, लाइक इट इज गुड और बैड. सो माइंड इज बेसिकली लाइक ए लाइफ, लाइक ए नाइफ. जैसे कि आपने बचपन में एक ऐसे लिखा होगा, साइंस इज गुड और बैड. तो नहीं, वो इट इज लाइक ए नाइफ. If it is in hand of good person, then it will be useful. If it is hand of bad person, then it will be chaotic, creating chaos. जैसे अभी है ना, न्यूक्लियर पावर और बॉम्ब बना दिया अब. तो बॉम्ब बना दिया उन्होंने, जो नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल. उन्होंने डायनामाइट का एक आविष्कार किया था कि जो पहाड़ वहाड़ तोड़ना पड़ता है रोड बनाने के लिए, उस समय हेल्प करेगा. बट उसका यूज कोई अगर गलत व्यक्ति के हाथ पे चला गया तो वो किसी देश को बर्बाद करने भी कर सकता है. सो इट डिपेंड्स, नथिंग इज गुड और बैड, डिपेंड्स अपॉन हाउ वी यूज इट. जैसे किसी सर्जन के हैंड में जाएगा तो उस वो नाइफ जो है सेव लाइफ को सेव करता है. तो जब माइंड जब फ्रेंड रहेगा, इफ माइंड इज एक्टिंग एज ए फ्रेंड, देन it is the seat of emotions. It is having this willpower, balanced lifestyle, stress free, nourishes health, happiness. Because mind has our connection with our body also. If mind is not happy, obviously will fall sick. There are connections with this actually ना. there are वो जो हमारे यहाँ जो चक्रा होता है ना, उस चक्रा का कनेक्शन माइंड के थ्रू बॉडी और माइंड का इंटरलिंकिंग कनेक्शन होता है वो. So so that's how it is written that if uh, it nourishes the health and happiness, and when it is in the knife is in miscreant hand, it's like then it kills life. So when mind is acting as enemy, it is uncontrolled, then it will cause this stress, depression, suicide and crimes. सुसाइड का वजह जो है माइंड ही है कि नहीं. किसी को पूछे कि ना कौन ये क्या कारण से वो सुसाइड किया, there may be external reasons, but if you see the person who commits suicide, mostly he will be alone for that much time, or for some time, considerable time, and he will be analyzing. So he will be only associating with his own mind only, right? He will be only associating with his own mind, and that is, um, he will be committing suicide. Like mind makes the person worthless, yeah, and then makes that your life has no use, nothing is remaining in life, it better to end it. And mind will give all this logics uh, and reasoning, and then so that the person commits suicide actually. And suicide is very dangerous. If you see nowadays, so some of the people who are so frustrated and wants to say their last word, they are coming on social media, making a video and blaming the person
that because of her or him I am going to commit suicide. And that is another thing. But when they are making video, they are alone. So before the whole processing has happened with their own mind only. They have not told anyone anything. I have lost my one friend because of this actually now. When Corona was going on, my friend Prasoon Kumar Jha, he was my batchmate, when branch mate in Haldia College, and I was having some treatment in Vellore, and everything was closed because of Corona lockdown. And all of a sudden, one of my another friend called and told that, do you know that person left his? I said, what happened? Then he also had a relationship issue. He was staying in living, and the girl started betraying him and saying that now we don't. 4 years they stayed, and then like the girl wanted to get rid of him, and it was very painful for him because it was his first relation, and he has given 100% to the girl, and then girl wanted to get rid of him because it was enough. Like the no more taste, right? Nothing new is happening, and then I don't like you. And she was very ambitious. I want to grow. I want to grow in the company. I want to earn this much and that was. And he was a very sober person. That enough we are earning. We don't have any liability. Let us enjoy the life. And she was not. And there may be some other reasons. And then he went to 22nd floor and then jumped, gone. So who told him not to commit suicide? Actually, tell his parents didn't tell because his parents were wealthy and nice, not like upper middle class, like kind of well-to-do. No home problem, no sister to marry, no financial issue. Brother is also very good. So family just small and very happy family, decent family from Madhubani, Darbhanga actually. No? He was a Maithili Brahman. A very nice attitude, no bad habit, no cigarette, no liquor, nothing. Just because one person made betrayed, he thought that life is useless. Arey, that is one person of your life. Your parents are there, your brothers are there, right? Your friends are there. Finally God is there who will never betray you. He's there in your heart from life after life. Then for one person, we can't say that one person only made, actually his mind made him commit suicide, that you are worthless. Are you understanding the situation? How much it is when it is enemy? Very dangerous. Actually, it can kill you. How much more danger uh, we can expect it? So Bhagavad Gita 6.6 also Krishna tells that bandhu means friend. Na? Atma bandhu atmat manastasya ena enat maivat manajita anat manastu satrutve वर्ते तात्मैव शत्रुवत। शत्रु मतलब आप समझते ही हैं, दुश्मन, और बंधु मतलब दोस्त। तो उसका भगवान जो है मतलब क्या बता रहे हैं, फ्रॉम हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट इनेमी। सो दोनों एक्सट्रीम है, आप समझ रहे हैं ना। एक जगह बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा जगह है ग्रेटेस्ट इनेमी। सो वो बीच में नहीं रहता है, मेरा माइंड थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, ठीक है ना। आइदर इट विल बी बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट इनेमी एक्चुअली ना, द सेम माइंड, आवर ओन माइंड विच इज इनसाइड, very deadly actually. So we understood that it is not good or bad, it can be based of the friend also, right? So it is not that we have to reject it, we don't have to criticize it, but we should know that this is the extreme which the role it can play, right? So uncontrolled mind have all these things actually, lack of confidence, loss of trust, madness, dangerous disease, weakened determination, hypertension, stress, depression. This is all the diseases which we are experiencing. The root cause is that mind is uncontrolled. Mind is just restless. Mind is like लेट हो गया वो, थोड़ा डिनर में प्रॉब्लम। no problem. So uncontrolled mind, ये uncontrolled mind. स्लाइड्स आप एक बार शेयर कर देंगे थोड़ा। It is just started only mostly. At the end will summarize. नहीं, एंड में थोड़ा शेयर कर दीजिए ग्रुप स्लाइड। हाँ ठीक है। Uncontrolled mind traps you to negativity. That recording will go. So uncontrolled mind traps to negativity. What is the nature of the uncontrolled mind? So this fourth thing, mind only, if you remember, then you will understand the uh, nature of the mind actually. This acronym we will use to
tell the nature. See, this is nowhere it is taught. I was just telling to students today that na any problem happens in life, people and then suppose you do some mistake and then people will start questioning you, अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं आज आज कूलम फोर्स पढ़ा रहा था क्लास में। मैंने बोला देखो, कूलम फोर्स कितना अच्छे से भी जान जाओगे, उससे तुम्हारा लस्ट कम नहीं होगा, ग्रीड कम नहीं होगा, एंगर कम नहीं होगा, है कि नहीं? तुम जो हो, तुम्हारा नेचर वही, क्योंकि तो मैं तो मैटर पढ़ा रहा हूँ भाई। I'm teaching you dead matter. I'm teaching you science is all a study of dead matters actually. No? I'm not teaching you anything about the living beings, how what problems living being faces, how to solve it. I'm telling you how this question will come. Two charges kept at some distance, r distance, will find out force and equilibrium problems and all. But life problems are different, right? That class I'm not given. No way, never it is given. Now you're learning physics, chemistry, biology. You will go to medical college, become doctor by learning more detail, and then you start treating patient. But when your own life problems will come, na, wife is angry at you due to some reasons. Now never you have learned this in medical college how to pacify. Now what is the nature, psychological nature of woman? You don't know. Neither woman knows that what is the psychological nature of the man. They start behaving that उसको ऐसे ही करना चाहिए, वो सोचता है उसको ऐसे ही करना चाहिए, ले हो गई, और कहीं नहीं पढ़ाया। और मैं बोला उसको कि ठीक है पढ़ाया तो नहीं, वो बात अलग है, बट यू विल टेक अप द रोल. Like suppose you don't know what is the role of husband, what is the role of wife, what is the role of son, what is the role of brother, and but you will get those roles. रोल्स तो मिल जाएगा समय के साथ। आप तो समय के साथ अभी भाई बहन है, बेटा है, बेटा है, बेटी है, एक समय के बाद आप पति बन जाएंगे, पिता भी बन जाएंगे, बट नेवर यू नो what I'm supposed to, how to treat your children mind will have its own problems, your mind will have problem, your wife mind will have problem, and all the mind will have problem with each other, and that is chaotic. But if you know it, then know the problem. And okay, the first teaching you learn today that okay, mind can be greatest enemy also and best of the friend also, right? And then we are going to learn how it other features of the mind, and then we'll solve also the problem. Okay, so mind is 1 hour session. How much we are going to learn? This is also not known by millions of people actually, and then we see the chaotic situation. So mind. So yeah, so mind, one thing is done, I'll just keep this, मैग्नीफाइज प्रॉब्लम्स। तो एक काम जो है उसका, वन ऑफ द नेचर ऑफ माइंड, MIND, दिस एक्रोनिम, mind is magnify the problem. So it magnify the problem. How it magnify the problem? One story I'll tell you that one girl was there in medical college in Mumbai, and she was the topper in class 10th, 12th, no, everywhere, and all the semester also she was the topper. And last semester result, she was thinking that I may not be topper this time. Are you understanding? I may not be topper this time because I did some mistake, and maybe other person will excel. And then this thought went into her mind, and it went and in went, and whole night she processed. And morning, when the she didn't come out, and then friends went in, tried to go inside, and they have to break the door and all that. Then we say that she did. And when 10 o'clock result came in the daytime, she was still the topper. Now my question to you is, who killed her? Anyone? कौन मारा उसको बताओ? माइंड सर। बस डन। दिस इज कॉल्ड एम्पली। प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मान लो ठीक है, अगर वो नहीं भी होती टॉप, है कि नहीं, वो सेकंड होती, थर्ड होती, क्या जाता बताओ? इतना सारे समय में तो टॉप कर ही लिया। लोग समझते हैं कि यू आर सिंसियर एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेल, एटलीस्ट यू आर गोइंग टू बी सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर. People get so much addicted to this, and mind told that how you'll for the face to others, and how you'll face the whole relatives, and then your siblings and the friends, and that she was dead. Same thing happened in a JEE IIT also once, and in another incident similar to this happened in IIT KGP. My friend told that he 2010 it happened that one guy committed suicide, and in the note he wrote that I wanted computer science in IIT Kanpur, but I got in Kharagpur, so I don't like it. My life is useless. अब आपको लगेगा कि ये तो utter foolishness है. Yes, it is utter foolishness, but for that person it was very serious thing.
Two incident which I quoted, they are known incidents actually, which we have seen in our lives to have. सोचो, मेरे को कंप्यूटर साइंस आईआईटी कानपुर में चाहिए था, मैं टॉपर था, मैं ये था वो था, अभी हमको चाहिए था। अरे भाई, चीजें बदलती रहती है, हमेशा आप एक ही ग्राफ पे नहीं चलता है। विराट कोहली हमेशा शतक नहीं मारता है, बीच में लो फेज आता है भाई उसका भी, बट वो परसिस्टेंस करके ना, रेजिलियंट होके, थोड़ा आध्यात्मिकता से थोड़ा सपोर्ट लेके अपने आप को बैलेंस करता है। क्रिटिसिज्म और अरे इसको रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, प्रेज भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, क्रिटिसिज्म मिलता है। टॉलरेट करना पड़ेगा, get a strength from some positive source, and then be calm, your time will come, and again he is excelling. So it happens with anyone, everyone's life. The people don't see for a broader picture, for a long span of time. They just see one small section and then decide. सोचो, अरे किसी का आईआईटी में नहीं होता मेरे भाई, किसी का किसी आईआईटी में नहीं होता, कोई ब्रांच नहीं मिलता, वो एनआईटी नहीं होता, वो कहीं इधर से पढ़ता है, उसका जीवन नहीं चल रहा है क्या? बताओ। Goal of life is not to become IITian. If it is there, we're very, very happy. We should be proud. We should be happy. But it should not go this extreme unnecessary. Like computer science तो मिला ना भाई, Kharagpur is not good, a bad college, right? It's not new IIT. It's already prestigious IIT. So this is the example I'm giving you how mind magnifies the problem, right? Problem उतना नहीं है. Actually no problem at all. So this happens in our life. This again, I gave you example of extreme people, but it happens in our life also that ना, कोई छोटा सा किसी को कुछ बोल दिया, कुछ गलती हो गया, अब सोचने लग जाते हैं क्या होगा क्या होगा, अब इसका मतलब क्या हो, कुछ एग्जाम में कुछ हो गया, किसी घर वाले को कुछ बोल दिया, कोई दोस्त को कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ बोल दिया, हम सोचने लग जाते हैं अभी क्या होगा। ठीक है, मतलब वी शुड सी प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम, बट डोंट मैग्निफाई अननेसेसरी टू मच, राइट? सो देयर वर सम वीडियोज हियर। लाइफ डिटरमाइंस प्रॉब्लम एंड माइंड डिटरमाइंस इज साइज। ये जान ली, प्रॉब्लम आते हैं, हम प्रॉब्लम को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जीवन में सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाउ मच इट इज द प्रॉब्लम, लाइक हाउ मच प्रॉब्लम इट इज गोइंग टू कॉज, व्हाट इज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम विल बी डिटरमाइंड आवर ओन माइंड। इफ इट इज कंट्रोल, इफ इट इज controlled by intelligence, supported by intelligence, right intelligence, then equals adequate size it will tell you, and then you can solve also. But it determines the size very big, it's become very difficult, right? उसके बाद आता है आई। माइंड से आपको समझ में आया, मैग्नीफाइड प्रॉब्लम। आई फॉर इमेजिन प्लेजर्स, वो इमेजिनरी प्लेजर में खोया रहता है। मतलब मैं BMW खरीदूंगा, मैंने देखा है, एक बार मैं भागलपुर में पढ़ा रहा था, तो पीछे गया तो बच्चे बात करते रहते थे, कभी पढ़ते उड़ते नहीं थे, वो फिजिक्स विजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, और अपना जो होता है ना वो मजाक करना कॉलेज में, अपने तरफ तो होता है ना कमेंट पास करना, ये सब में एक्सपर्ट थे वो सब। मैं गया उनके पास तो मैं देखा कि वो पूरे क्लास में ना एक ड्राइंग बनाया है, कार का ड्राइंग बनाया है, बहुत बढ़िया, very nice drawing actually, I liked it. And then I asked that what you want to do and all. He said, sir, I want to purchase car like this. So see, I'm not saying that he will not be able to purchase, he may go through other sources, he can become a businessman, or he can become a YouTuber, or some other thing he will never entrepreneur he can become, and if destiny allows he will become. I'm not saying that, but the point I'm saying that many people are living in द इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना। मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। आप BMW चला रहे, बट BMW के जो आप जो होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप काम नहीं करना। माइंड विल जस्ट टेल यू दिस प्लेजर विल हैपन, आई विल हैव दिस एंड आई विल हैव दैट एंड देन आफ्टर दैट आई विल हैव दैट, बट हाउ मच endeavor I have to do for that, that mind will not tell you. So that it keeps you in illusion and just in a virtual world actually, na. So the price which you have to pay to get that pleasure, that mind will not tell you, it just allow you to imagine the pleasure actually. So that is one in this feature actually, na. Then so we should not like romanticize or demonize this actually, na. Both extreme we shouldn't go to, but we should utilize whatever opportunity we have. So then we have this neglects. So the third thing is that you understood the imagines pleasure. So it will imagine the pleasure, but it will not focus on the endeavors which we have to do for getting that pleasure. Then third is that if you have some bad habits, we have some self-destructive inclinations and then habits and all, then
माइंड विल टेल यू दैट तुमसे नहीं होगा, तुम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज योर सेल्फ एक्चुअली ना, यू डोंट हैव एनी पावर टू चेंज, सो नेग्लेक्ट्स द पावर टू चेंज एक्चुअली ना। दिस इज ऑल्सो योर माइंड विल ओनली कन्विंस यू दैट तुम ऐसा ही है, तुमसे होगा नहीं एक्चुअली ना, तुम छोड़ दो, तुम ऐसा ही है, मतलब जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। So this is also one thing which mind will, you can't change yourself. That is also very deadly uh, feature of this mind actually, which I can't do it. Okay, so that is also the nature of mind. If you change the way you look at things, the things you look at, that will change. So this we have to learn from this, that okay, mind has this nature, but I should know that this is not reality. The reality is I can change, and we'll discuss ahead how to change. But you should know that this is how the mind tricks us. And the last is dependence. So it will deny the dependence. It will deny the dependence. Dependence on the help of our mentors and the seniors, those who have this controlled mind some extent, or the God. So it will deny that dependence actually ना, कि तुम्हारा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना, आप ऐसे ही रहोगे ना, नो वन कैन चेंज यू एक्चुअली ना, नो वन कैन चेंज इवन ना। वो बोलते हैं ना कि किसी को बोले कि हम लोग कॉलेज में किसी को बोलते थे कि आज आके आप थोड़ा चैंटिंग करिए, देन यू कैन गेट रीड ऑफ ऑल दिस हैबिट्स एंड ऑल, दे टेल यू दैट सी, मैं अगर तुम्हारे मंदिर में आऊंगा तुम्हारा मंदिर गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। अगर मैंने माला कर लिया तो माला गंदा हो जाएगा, मैं इतना गंदा, अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, मंदिर नहीं होगा गंदा। जब जब कोई गंदा पानी होता है, या कोई देखते हैं यूरिन पास कर देता है, कितना स्टिंकिंग करते रहता है, बस सनलाइट आता है, सनलाइट जो है वो उसको प्यूरिफाई करता है, उस जगह को, उसको ये वाष्प बना के इवेपोरेट करके, बट सन रेज कभी गंदा नहीं होता है ना, सन गंदा होता है। ये हमको ये चीज समझना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो ए चीटिंग ऑफ द माइंड, दैट टेल माइंड विल टेल यू दैट तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता है, नो सुपीरियर इंक्लूडिंग गॉड विल हेल्प यू एक्चुअली ना। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार पे तेरे आऊं, है कि नहीं, मेरा मैली चादर, अरे भाई मैली चादर से लेके जाओ, वो साफ चादर हो जाएगा, चिंता मत करो, प्रोसेस है वहां पे, वह वो उसी से होगा। अब उसके पास भी नहीं जाने देगा माइंड आपको, जो आपको हेल्प कर सकता है, तो आपको क्या होगा बताओ। पहले तो बोल रहा है तुमसे नहीं होगा, तुम खुद चेंज नहीं कर सकता, और दूसरा भी कोई तुमको चेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज वेरी डेडली गेम विच माइंड प्लेज विथ अस, ओके ना। तो ना, mind will tell you that don't tell God how big your, so this we should know that uh, mind will tell you that even God can't help you, but we should understand that don't tell God how big your problems is, tell your problems how big God is. So this is the conclusion we should have, that the mind is telling you that no, even God can't help you, no, no, God can help, no problem is very big for God actually now, is for us, for our mind, because mind has amplified those problems, it seems very big. For God it is not a problem, he can just solve like this actually. And prayer, now we can say that ना, अरे इतना छोटा छोटा चीज के लिए क्यों भगवान के पास जाए, है ना। So we should know that for God nothing is so big that he can't solve it, no problem is so big that he can't solve it. And second is, no problem is so small that he will neglect it. So we should not think that इनके पास जाएंगे तो मेरा छोटा मोटा आदमी, हम तो छोटे लोग हैं, हमारी छोटा समस्या है, वो क्या बताएंगे, वो तो इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। ही सिटिंग इन द हार्ट 24/7 ready to help us. If we have this attitude to genuinely seek help and pray, then surely we will get help, that is for sure. So mental scripts क्या है? Mind scripts through the kind of books we read, the kind of movies we see, the kind of music we listen, the kind of friends we keep. So mind skips through this. So this is how the mind programs things actually ना। माइंड को कैसा एसोसिएशन आप दे रहा है, कैसा कंटेंट दे रहा है, उससे चीजें वो सेव करता है। कैसा किताब पढ़ते हैं आप, कैसे मूवीज देखते हैं, कैसे म्यूजिक सुनते हैं, किस तरह के फ्रेंड्स रखते हैं, वो आपको उसके अनुसार से मेंटल स्क्रिप्ट तैयार होता है, और फिर माइंड जो है ब्रेन को उस तरह से प्रोग्राम करता है। ओके, सो व्हाट वी एसोसिएट इज द थॉट वेव्स ऑफ अदर थ्रू ईथर। सो आप जानते हैं कि
पंच तत्वों में एक ईथर आता है ना, अर्थ, फायर, एयर, ईथर and water, correct? So ether is not air, actually ether is different than air, but through this association takes place. Ether is so strong, I'll tell you. uh, ये जो डिनाइल डिपेंडेंस और वो यू कांट चेंज वाले में एक और एग्जांपल आपको पता होगा, मैं जस्ट मिस कर गया, वो हाथी वाला एग्जांपल आप जानते होंगे कि हाथी को बचपन में ना, वो जो हाथी वाला उसके पैर को एक छोटे से खंबे से बांध के रखते हैं, और वो बड़ा भी हो जाता है, वो जाके सर्कस में बड़े बड़े चीज करके आ जाएगा, बट जब आएगा तब महावत उसको जब उस छोटे से खंबे में बांध देता है, उसको तोड़ नहीं पाता है, उसको लगता है बचपन से मैं तोड़ नहीं पाया हूँ, अभी मैं तोड़ नहीं पाऊंगा उसको। तो दैट्स हाउ माइंड ऑल्सो टेल यू दैट यू कांट चेंज, नो बॉडी कैन चेंज यू, ऑल्दो यू कैन चेंज एक्चुअली। सो ईथर के थ्रू हम बात कर रहे थे कि ईथर जो है वो इसे इट इज देयर इन स्पेस, and mental wave travel through ether to enter our body through the ether. So it is one of the five elements, and through ether these things happen. I'll tell you some examples to understand. जैसे हम लोग भी करते थे क्लास में और हमने उसको फील किया हुआ है। जैसे मान लो क्या करो आप कि व्हाट यू डू इज, जैसे क्लास चल रही है तो टीचर क्या करता है कि एक जन को बाहर भेजता है, एक स्टूडेंट को, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट को बोलता है कि आप सब मिलके इस बंदे को क्रिटिसाइज करो, मतलब उसके बारे में बुरा बोलो आप, कि ना ये ऐसा है, वो लेट आता है, नहाता नहीं है, ऐसे दिखता है, रूड दिखता है, अरे दिखाता है अपने आप को, जो भी निगेटिव आप जानते हो वो बोलो, आप बोलो उसके बारे में। एंड देन एवरीबॉडी थिंक्स नेगेटिव एंड स्पीक्स, and that person is out of the class, and then teacher calls that person। जैसे ही वो इंटर करेगा क्लास में उसको खराब फील होगा, ही विल फील अनकंफर्टेबल, उसको लगेगा कहीं तो मैं गलत जगह आ गया हूँ। so when you where you are unwanted, where people don't like you, and they have this kind of vibrations are there in this classroom, in this place, then you will not feel good. And then the opposite also we can do, that you send one student outside and then tell others people to glorify the student, appreciate the student, and when the other student will come he will feel very nice. So this is ether connection. Another example which my mentor was giving, which I was also there at that time, I was serving in a coaching institute called Partha in Kolkata, and one cook was there, and my mentor was that time the in charge of that place. So he was not giving leave to the cook, although he was giving sufficiently, but the cook was always thinking that अरे ये मेरे को घर जाने नहीं देता है, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को पैसा नहीं बढ़ा रहा है, मेरे को ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, एंड ही हैज लॉट ऑफ निगेटिविटी। और आप एक बार किसी व्यक्ति के प्रति कुछ निगेटिव बना लीजिए और ऐड होते चला जाता है, हर घटना में लगेगा ये इसका इसका यही मतलब है, इसका यही मतलब है, इसलिए बोल रहा है। एंड देन यू ना मैग्नीफाइज करता है, एम्पलीफाई करता है, निगेटिविटी भर भर के आएगा। सो व्हेन ही वाज कुकिंग and my mentor who was eating, he was always have a stomach problem। तो उसको उनको लग रहा था कुछ बीमारी है, मेरे को दवाई खा रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, एंड देन ही वाज नॉट गेटिंग क्योर्ड, एंड देन आफ्टर सम टाइम ही केम टू नो दैट द कुक इज वेरी अनहैप्पी विथ हिम। सो ही टॉक टू दैट कुक, अरे आप क्यों ऐसे, मतलब मेरे से क्या प्रॉब्लम है? तो बताया कि आप छुट्टी नहीं देते हैं, मेरे को पैसा नहीं बढ़ाते हैं, मेरे को उस समय जाना था, आपने जाने नहीं दिया। And then when things he told, and then also he came to know that through other people that this cook criticizes him to every place. Then what he did is that if you're not very much happy, then you can leave and find some other job, we'll get some other cook। And when other cook came, his stomach problem cleared, मतलब it was not so much problem with him। So then he understood that time that this is how, because the person does not like you, and then with that consciousness which only he's cooking, so that will go into the food also, and then through the ether connection you will also feel that negativity, and there will be problem with your um, mind also. So you will feel it in your general life also, if you go to some place and then the person is not very happy with you, and he's your we can say that he's envious of you, you will feel that होता है ना, vibe आता है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा vibe आता है आपसे मिलने से, ऐसा वो अच्छा vibe नहीं आ रहा था वहां पे, इसका मतलब वही है कि through the ether that negative or positive things are there।
Okay, so this is sound has power to heal and realign. So through sound travel through air एंड माइंड वेव ट्रेवल थ्रू ईथर। तो ये चीज हमको समझना चाहिए, साउंड जैसे साउंड जो है उसका एयर से कनेक्शन है, उसी तरह से माइंड वेव भी होता है। जैसे कोई होता है ना कि कभी आप सुने होंगे कि ना, अरे आपको याद कर ही रहा था, अभी आपका फोन आ गया, देखो बताओ। तो दिस इज माइंड वेव, समझ रहे ना, कि माइंड से आप किसी एक जगह रह के भी दूसरे जगह से आप कनेक्ट रह सकते हैं एक्चुअली ना सो दोज दिस माइंड वेव एक्चुअली ट्रेवल थ्रू ईथर। तो जिसके बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, देन दैट आल्सो विल अफेक्ट दैट पर्सन एक्चुअली ना। एक बार ऐसा एक वो हुआ था कि एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दिस, बट द ओवरऑल आई टेल यू व्हाट वाज हैपनिंग, दैट one person was drowning, and and here some people were thinking good about him, and then praying actually at some other place, and he got support, uh, he got mental strength by that, and he came out actually, well, he was saved. So the point I'm trying to say that even the distant people can communicate or influences other through the mind wave actually। उसे जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, जो एक जगह बैठे बैठे किसी दूसरे को वहां मार भी देते हैं, दिस इज दिस ओनली दिस दे हैव दिस पावर एक्चुअली ना, मोर पावर ऑन दिस माइंड वेव्स। सो इट्स वेरी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हेल्थ का, अच्छे भाई का, वो सब इसमें आता है। द साइंस ऑफ वाइब्रेशन, साइमेटिक्स। तो साइमेक्स एक ये है, वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाउ द साउंड इज इन्फ्लुएंसिंग एंड गिविंग द पैटर्न ऑन द डस्ट। तो सिमिलरली माइंड ऑल्सो थ्रू द साउंड वाइब्रेशन and through this ether, it can, we can reprogram, like how the reprogramming will happen of the dust particle through this, I'll tell you. So 1 minute, just so let me know if the sound is, you are able to see the sound. I don't think you are able to see. The first experiment with cymatics music video is called a clanging plate. Okay, okay, ठीक है, A clanging plate is basically a आप metal chat plate पे लिख attached सकते to the top हो। of the speaker, stand on top of the You plate, are able to hear or and not? on top of the speaker, tape No, no. vibrates, which forms different shapes. Sound. मैं जो वीडियो चला रहा था आपको सुनाई दे रहा था क्या? हेलो? नो प्रॉब्लम। नो। बहुत कम आवाज आ रहा था सर। Then how to, what I should select so that you can hear? Yes, in the share option it will be there. No. Okay, then I'll show this. I'll just watch this and then I'll talk. Okay. Prabhu, you can share the video in the group later. Group we can share because time also not very much. Am I sharing now? Okay. So this you can watch also, you will understand what is happening. Sound is getting produced. Doesn't really kind of work. Okay. So actually what is happening here is, I will tell you, and this video I'll send in the group. Okay. So what is happening is, this pattern which you see, this pattern of the sand is getting formed by different sound vibration which is produced so this is how the sound is influencing the different sound. Each programming the different patterns actually
So similarly, that on this mental plate, the sound vibration will also reprogram, and the meditation actually will reprogram our mind actually ना. So this is the point I wanted to make from here. Like you see this is, क्या बोलते हैं इसको बताओ, चप्पल है, चप्पल नहीं बोलते हैं, थोड़ा खराब लगता है एक्चुअली ना, मतलब ऐसे मतलब किसी को गिफ्ट देना है ना, चप्पल गिफ्ट दिया मैंने है कि नहीं, चाहे आप कितना भी अच्छा ब्रांडेड चप्पल दो, वो अच्छा गिफ्ट नहीं माना जाएगा, है कि नहीं, बिकॉज इस तरह का कॉन्सेप्शन है। तो लेकिन संस्कृत में ना हर चीज को इज्जत से बोला जाता है, मतलब इज्जत दिया जाता है हर चीज में एक्चुअली ना, संस्कृत में। तो संस्कृत में इसको पाद त्राण बोलते हैं ना, पाद त्राण। पाद त्राण क्या है कि ये जो है वो त्राण मतलब ना त्रायते, सो इट गिव्स, पाद मीन्स फीट एंड त्राण मीन्स दैट विच गिव्स रिलीफ ना, द सोलेस टू फीट। जो आपको ना आजकल अलग अलग टाइप का चप्पल आता है, कोई एक्यूप्रेशर वाला रहता है, कोई थोड़ा, तो दिस इज पाद त्राण। सो वन गिव्स सोलेस टू द फीट। उसी तरह से मंत्रा ना, तो मंत्रा क्या है, सोलेस टू माइंड। मन को जो है वो सोलेस प्रदान करता है, मन को थोड़ा शांति प्रदान करता है। मना मीन्स माइंड, मन, एंड त्र मीन्स दैट विच गिव्स रिलीफ, तारता है उस चीज से, मतलब उसे प्रॉब्लम से तारता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मंत्रा। हाउ मंत्रा वर्क्स, ये तीन चीज करता है, पेसिफाइज, प्यूरिफाइज एंड पिक्स अप। सो पहले तो आपको पेसिफाई करेगा वो चीजों को ना, काम डाउन करेगा। जैसे पहला आप अगर चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, उसका पहला फल यही है कि जो जो मन का जो एजिटेशन है, जो जो आ, उसमें जो तनाव है, जो बहुत इधर उधर जा रहा है ना, तो ठंडा हो जाएगा। पेसिफाई से समझते ना, काम डाउन एक्चुअली ना। सो निगेटिव से एटलीस्ट वो जीरो तरफ होने लग रहा है। प्यूरिफाइज मतलब आपको पॉजिटिव करेगा वो, कि प्यूरिफाइज मतलब जो भी निगेटिव डिजायर है, कुछ जो हैबिट है, वो सब चीज चला जाएगा। जो जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी वासनाएं हैं ना, मैं अपने जीवन में भी देखा हूँ कि अपने से वो नहीं जा रहा था। मैं कभी शिव जी के मंदिर में प्रार्थना कर रहा हूँ, कृष्णा से कर रहा हूँ, एकादशी में ये छोड़ दूंगा, आज से ये प्रण लेता हूँ, वो हो ही नहीं रहा था। जब हम कॉलेज गए और बस कुछ महीने चैंटिंग किए होंगे, उसके बाद ना मुंह से अपने आप जो होता है ना, सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में कुछ गालियां निकल जाती है जब हॉस्टल में रहते हो। और जबकि ऐसा संस्कार घर परिवार से नहीं था, फिर भी जब कभी कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा वर्ड निकल जाता है बिहार में ना, कुछ कुछ रेगुलर जो यूज होता है वर्ड, जो कि नहीं करना चाहिए, अपने आप चला गया। वो नॉन वेज छूट गया अपने आप, वो बैड हैबिट छूट गया जिसको हम इतने साल से प्रयास कर रहे थे छोड़ने का। सो प्यूरिफाइज ना, इट विल प्यूरिफाई द माइंड विथ नेगेटिविटी बिकॉज, एंड देन पिक्स अप, आपको वहां से आपके चेतना को वहां से उठाता है ऊपर, है कि नहीं, यू यू कम अप एक्चुअली, ऊपर उठते हैं, योर थिंग्स थॉट बिकम ब्रॉडर। सो जैसे एक एग्जाम्पल प्रभु जी दे रहे थे कि उनके पिताजी, एक बार क्या हुआ था कि उनके मम्मी बीमार पड़ गई थी, उनको कैंसर था उनके, और उनके जीजा जी भी बीमार पड़ गए थे साथ में। तो सोचो एक व्यक्ति के लिए उसकी उसकी पत्नी बीमार है, और उसकी बेटी का, उसका जो दामाद है वो भी बीमार है और कैंसर से जूझ रहा है, दोनों एक साथ, तो कितना टेंशन में होंगे। एक बार वो इतना परेशान हो गया, पैसे का दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये वो सब सोच करके वो बोले कि ना सुसाइड ही कर लूंगा। बट प्रभु जी उनको बोलते रहते थे कि आप चैंटिंग करिए थोड़ा ना, यू चैंट हरे कृष्णा। एंड देन when he was alone and all these thoughts came, फिर उन्होंने जो याद आया कि रे मेरा बेटा बोलता था मेरे को जाप करने के लिए, थोड़ा जाप करके देखता हूँ। एंड देन ही चैंटेड एंड देन ही गेव ए मैसेज, उन्होंने मैसेज टाइप किया कि हैट्स ऑफ टू योर चैंटिंग, है ना, मेरे को बचा लिया वो। सो दैट पेसिफाई द माइंड एक्चुअली ना, वो जो उस समय आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो प्यूरिफाइज, पिक्स अप, है कि नहीं। सो ये जो है महामंत्रा जो है वो कलयुग के लिए यही महामंत्रा दिया हुआ है। कली संतरण उपनिषद में दिया हुआ है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है इति 100 इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। there is font problem here actually, सर्व वेदेषु दायते। तो एवरी इन ऑल द वेदा इट इज गिवन दैट ये 16 अक्षर का जो हरिनाम है, ये सब कली के हर कलमश से उसको कलमश को नाश कर सकता है। तो ये आफ्टर सर्चिंग थ्रू ऑल द वैदिक लिटरेचर वन कैनॉट फाइंड ए मेथड ऑफ रिलीजन मोर सबलाइम फॉर दिस एज देन द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। बिकॉज अलग अलग युगों में क्या था कि आप
बहुत बड़ा यज्ञ करके, धर्म अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके, मंदिर में पूजा करके कर सकते थे। बट हमारा अभी कलयुग में शरीर ऐसा है कि हम एक फास्टिंग ठीक से नहीं कर सकते हैं। कोई प्योर ब्राह्मण मिलना मुश्किल है जो यज्ञ कराए, प्योर घी नहीं मिलता है। तो जो पुराने युगों में जो 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 पॉसिबल था वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ना शारीरिक स्थिति से, मानसिक भी नहीं है, और बाहर भी व्यवस्था भी ऐसी नहीं है जिससे में हम कुछ प्यूरिटी से कुछ कर सके। तो भगवान ने हमको रिलैक्सेशन दिया है कि भाई कलयुग में आपका एज कम है, आपका मानसिक शारीरिक कमजोरी है बहुत, आप जो है नाम लीजिए भगवान भगवान का, हम इसी से आपको उद्धार कर देंगे। तो भगवान ने स्पेशल कंसेशन जो है वो कलयुग में दिया है। तो ये उपनिषद में भी बताया जाता है। तो एंड देन अनंत संहिता में भी इस महामंत्र का चर्चा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। This 16 name 32 syllable mantra is the Mahamantra in the age of Kali by which all living beings can be delivered. One should never abandon chanting this Mahamantra and take to other so-called purificatory process which are practiced by rascals or the engage in chanting their metrical composition of the name of Krishna. So बताया कि आप और कुछ मत करिए, आप ये करिए। अगर रामायण आप वाच किए होंगे तो उसमें भी बाद में बताते हैं, भगवान हनुमान जी को बताते हैं कि कलयुग में जो है मेरे नाम के प्रचार में आप सहायता करिएगा, आप यहीं रहिए। बिकॉज कलयुग का यही है, क्योंकि होता है ना, जैसे मान लो कि जो बच्चा टॉप कर जाता है, बच्चा ना वो अच्छे अच्छे बच्चे निकल गए, और जो बच्चा है हर साल फेल कर जा रहा है, मतलब जो सतयुग में पास नहीं किया, त्रेता में पास नहीं किया, द्वापर में पास नहीं किया, समझ रहे हैं ना। तो जैसे मान लो 3-4 क्लास अगर वो पास नहीं करता है तो टीचर क्या करता है, टीचर उसको अपने से ही आसान क्वेश्चन देता है, बोलता है ये कर लो, बहुत हेल्प भी करता है, पास कर देंगे तुमको। तो हम लोग का वही सिचुएशन है, हम लोग सतयुगवासी त्रेता युगवासी नहीं है, जिसका आयु 1 लाख साल, सतयुग में 1 लाख साल था, त्रेता में 10,000 साल था, द्वापर में 1,000 साल था, अभी हमारा 100 साल है। बट हम 100 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। WHO के अनुसार से हमारा जो आयु है वो 60 साल 55 साल है ऑन एन एवरेज। अभी हमारे जनरेशन के आने समय तक तो मतलब जरूर आ जाएगा उस पर। हमारे दादाजी लोग का जनरेशन 80 तक गए थे, उससे ऊपर 100 तक गए थे, बट अभी नहीं जा रहे। So time is less, and then mind is all disturbed. So we have got a very simple, but we should not underestimate that it simple है, इसके मतलब इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इससे होगा जो वहां पे होता था वही होगा। मंत्रा मेडिटेशन अफेक्ट्स ऑन आवर थॉट वेव्स, एक रिसर्च हुआ था जिसमें कि 60 लोग को उन्होंने लिया था, 30 लोग को चैंटिंग करवाया और 30 लोग को नहीं चैंटिंग करवाया, और जो चैंटिंग जिनसे करवाया उसमें देखा गया कि उनका जो माइंड वेव्स है वो इसमें आता है, रिलैक्स अलर्ट जोन में आता है, रिलैक्स भी है और अलर्ट फॉर द अदर थिंग्स एक्चुअली। तो गुडनेस में आपको लेके आता है वो एक्चुअली ना, जिस ये डॉक्टर डेविड वॉल्फ एंड नील एबल रिसर्च किए थे इस पे एक्चुअली ना। ठीक है, तो देयर आर मेनी रिसर्च बट वन आई एम शोइंग यू लाइक दिस। और ईईजी से चलता है पता। तो क्या क्या करना चाहिए चैंटिंग में, तो हमको एक पंच तत्व मंत्र होता है जो पहले चैंटिंग करना चाहिए। आप लोगों में बहुत सारे लोग करते हैं चैंटिंग, तो आपको पता होगा, बट जो नहीं करते हैं उनको लिए बता देता हूँ कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये हम पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं। यही पांच पंच तत्व हम लोग भी चर्चा करेंगे बाद में इन पे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो दे ऑल्सो प्रोपिगेटेड दिस मंत्र, उसका उनका नाम लेके तब हम चैंटिंग करते हैं। तो उससे जो भी चैंटिंग में जो भी ये मन का भटकाव इधर उधर होता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है, वो सब माफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चैंटिंग ऑडिबली लाउड इनफ टू हियर द मंत्र, उतना हमको जोर से बोलना चाहिए ताकि हम सुन सकें, मन में नहीं करना है, कान कान के थ्रू जाना चाहिए। आंख में मन, जिह्वा और कान दोनों तीनों जो है वो इंगेज रहना चाहिए। प्रोनाउंस ईच नेम डिस्टिंक्टली, सबको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमको डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस करना चाहिए। एंड तीसरा है चैंट विथ रेस्पेक्ट एंड व्हाट, रेस्पेक्ट, डिवोशन एंड कंसंट्रेशन। सो रेस्पेक्ट के साथ कि भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। एंड जस्ट 1 मिनट, क्योंकि भगवान का नाम उनसे अभिन्न है तो हम उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। सो आप किसी बड़े आदमी के साथ है तो उनके साथ ही रहना चाहिए। एंड देन या और क्या है, यू कैन सिट इन एनी प्लेस सिटिंग और वॉकिंग फेसिंग एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप फेस करके चलते हुए बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं, बट बेस्ट है बैठ के चैंटिंग करना, सुबह में चैंटिंग करना ज़्यादा बेस्ट है। यू कैन चैंट एट एनी टाइम, आप सुबह में, शाम को, रात को, कभी भी कर सकते हैं, बट ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो ज़्यादा मतलब एडवाइज किया जाता है, सलाह दिया जाता है।
यू कैन चैंट आइदर बिफोर टेकिंग बाथ और ना आफ्टर बाथ, सो नहाने से पहले नहाने के बाद भी कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि हम अगर हम नंबर 2 जाते हैं मतलब लैट्रिन जाते हैं तो उसके बाद नहा लेना चाहिए। ये सब मतलब शौच सफाई का एक नियम है। ऐसे हम जैसे सुबह सुबह उठ गए, हम अभी बाथरूम नहीं गए हैं, तो उस समय अगर हम कर सकते हैं, पर नहा उसके बाद अगर बाथरूम चले जाते हैं तो नहा लेना चाहिए, उस समय करना चाहिए, नहीं तो ऐसे देन वी हैव इट इज रिकमेंडेड टू चैंट बाय कीपिंग काउंट, ना नंबर के साथ करता है, तो हम लोग क्या करते हैं वो कि 108 बार उसको करते हैं। जैसे एक मंत्रा ये हो गया चैतन्य महाप्रभु का एक मंत्र, और 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो 108 108 बार अगर इसको करते हैं तो एक माला काउंट होता है 108 बार। 108 क्यों किया गया है? क्योंकि 108 उपनिषद है, और 108 उपनिषदों का सार जो है वो महामंत्र ही है, तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए 108 बार हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो डोंट्स ऑफ चैंटिंग, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एक पोर्शन खाली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, ऐसा नहीं कि एक खाली हरे कृष्णा की वो हरे राम नहीं की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट चैंट ऑन द गुरु बीट ऑफ द जपा, तो मैं अगले क्लास में आपको जपा बीट दिखाऊंगा, एक बीच में होता है जो ये छोटा सा ये आपको दिख रहा है ना ये वाला, तो वो उस पर चैंटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो उंगली को ऐसा फेर लेते हैं, तो वो पीछे फिर माला जो है दूसरे डायरेक्शन में चालू हो जाती है। एंड वन शुड चैंट वाइल रीडिंग, वन शुड नॉट चैंट वाइल रीडिंग बुक न्यूज़पेपर और वाचिंग टीवी और मोबाइल, तो ऐसा नहीं होता टीवी भी चल रहा है यहाँ पे हरे कृष्णा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, मैच चल रहा है, देख भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उस समय को आप अलग समय दीजिए थोड़ा, जितना है एक चैंट एक राउंड करने में 7 से 8 मिनट लगता है, 8 मिनट मानिए, 8 मिनट आप एक्सक्लूसिव भगवान को दीजिए, बाकी समय आप जो भी करें, आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए, सब देखिए करिए, बट वेन यू आर गिविंग टाइम टू गॉड यू शुड गिव टाइम टू गॉड ओनली, तो उससे क्या है मन मन भी शांत हो रहा है एंड भगवान का नाम भी हो रहा है, भक्ति भी हो जा रही है, सो इससे डबल बेनिफिट, सो वी शुड नो दिस। ये सब डबल काम एक साथ नहीं करना चाहिए कि हम न्यूज भी पढ़ मोबाइल में शॉर्ट्स भी चला रहे हैं, इधर चैंटिंग भी कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट गुड। बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग क्या है? आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान का नाम अजामिल ने एक बार किया था उसी समय हो गया। एंड रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड ड्राइव्स एंड हैबिट, जो आपका जो डिजायर जिससे आप पार पाना चाहते हैं वो सब खत्म हो जाएगा अपने आप, जो मैं आपको बताया था थोड़ी देर में कि जो अभी जो है सिचुएशन हम लोग का है कि हम ना अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन, लिकर से अट्रैक्शन, ये सब चला जाएगा अपने आप। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड पीस ऑफ माइंड, ये सब आपको मन की शांति हो जाएगी, खुशी खुशी मिलेगा, रियल हैप्पीनेस मिलेगा, इनलाइटमेंट मिलेगा, आप जो है होता है लिफ्ट्स अप, picks up what people say about chanting, so there are these are the some other people who are जो जॉर्ज हरिसन बताया कि इट्स रियली a process of having realization of God, George Harrison, and there are so many people talking about this. So actually, I have a meeting, so I need to rush. That's why I'm not showing you. But Alfred Ford, जो Ford कंपनी है, वो जो है वो भी डिवोटी हैं, मायापुर में मंदिर बनवा रहे हैं. So then he also claims it that this chanting has changed my life, tremendous effect. Henry Ford के पोता है actually. So there are so many people who has got benefited and he decide, and then there are enough है ना, ऋषिकेश मफतलाल जो मुफ्ती जीन्स जो आप देखते हैं वो इनका कंपनी है. सो देर आर सो मेनी पीपल ऑफ ऑल वेराइटीज, दो जो है दिस ये मॉडल थी, बाद में ये भक्त बनी, यहाँ देखो ये लड़की डांस कर रही है वो, so she also got benefited and other habits got, so there are enough things, enough people, and we are have seen in our lives also which the benefit. I'll request all of you that who are not chanting can start chanting, and we'll personally talk on this mode. Okay, Hare Krishna. Hope you got some idea. Next week we'll meet. Happy Ram Navami in advance. I'll share 2 prayers on Lord Rama. You can remember in this week. And नाम रामायण उस दिन आप नाम रामायण पढ़ सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में. ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. श्रील प्रभुपाद की जय. Should we end here?